Common skin infections. If we talk about common skin infections, so these infections को अगर हम लेके चलें, so you can see a block of the skin on your right hand side, and this block is not new to all of us as being doctors, because we have all seen this cross section of the skin in our biology class in pre-medical. And this is simply a cross sectional diagram of a skin showing the three layers of the skin with their respective appendages. And अगर skin and soft tissue infections की बात करें, so it can be defined as inflammatory microbial invasion in these layers of the skin or subcutaneous tissue, and they become really challenging for physicians and pretty disturbing for the patients. And हमारी life में हम बहुत दफ़ा खुद भी as human beings किसी ना किसी स्किन इन्फेक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं, एंड एज फिजिशियंस वी कम अक्रॉस दीज कंप्लेंट्स इन आवर डेली प्रैक्टिस एज वेल, चाहे हम डर्मेटोलॉजिस्ट हो या ना हो, लेकिन दे डू कम टू आवर क्लिनिक्स. If we talk about microbial invasion, then microbes, so it's a very big kingdom. Microbes can be bacteria, parasites, viruses, fungi, so on and so forth. But today, we will just be covering the bacterial skin infections. Reason being, it's a very big topic, a very big subject. So we'll just cover the bacterial bit of this. Skin structure infections. I always say that skin, being the largest organ of the body, bears all the insults, all the wear and tear, all the biological hazards, environmental and everything. So this is the first line of defense. So whatever happens to this organ, that is visible to the naked eye. सो बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन की अगर हम बात करें, तो हमारे लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि व्हाट आर दोज बैक्टीरियाज और ऑर्गेनिजम्स that are causing the common skin infections that come to our OPD in daily practice. So primarily gram-positive cocci are the main culprits, in particular Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes. And according to some studies, more than 40% of all the SSTIs are caused by Staph aureus. When we talk about skin, one thing comes in our mind, and that is image, picture, tasveer. So that thing is the first thing that comes in our mind. So no skin diagnosis is complete without visuals, without images, without a clinical diagnosis. So the tool which is the most important tool in diagnosing skin and skin structure infections is uh, हमारी आंखें. अगर मैं चैट बॉक्स में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि आप लोग अपना लिखें यहाँ पर, एंड अगर किसी पॉइंट इन टाइम में मेरी आवाज ब्रेक हो जाए या कुछ हो, तो प्लीज डू लेट मी नो. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए कि हम ये जानें कि स्किन और स्किन स्ट्रक्चर के जो इन्फेक्शंस हैं, इसके अंदर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है. सो इमेजेस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब आज हम कुछ केसेस की बात करेंगे और उन कॉमन केसेस की बात करेंगे जो हमारी ओपीडी में आते हैं. सो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला केस है हमारा, वो है फॉलिकुलाइटिस. नाम बता रहा है जैसे फॉलिकुलाइटिस, ये हेयर फॉलिकल का इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है, और it can occur in one hair follicle or multiple hair follicles individually, and it only occurs in the hair bearing area. और start कैसे होता है? It starts with a red dot, and it ultimately has a white tip on top of it, and it may be associated with rash or pruritus, not necessarily though. Usually folliculitis की अगर मैं बात करूँ, it is a self limiting disorder. Self limiting disorder होने की वजह से usually patients do not seek help, एंड ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है. बट व्हेन पेशेंट हैज अंडरलाइंग दूसरे को इसके साथ कंप्लेंट्स, या ये रिकरेंस हो या वाइड स्प्रेड हो बॉडी पे, तो पेशेंट्स डू कम एंड सीक हेल्प. एंड व्हेन पेशेंट कम्स मींस के पेशेंट तकलीफ में है, और वी हैव टू take care of our patient accordingly and manage the patient accordingly. And the causative organism that causes it is Staph aureus. जैसे मैंने बात की, सबसे इम्पोर्टेंट बात स्किन में होती है डायग्नोसिस की. आई कांट रिकॉल
कि हमने कभी अपनी प्रैक्टिस में इतने साल की और अपनी ट्रेनिंग पीरियड में कॉमन स्किन इन्फेक्शंस के ऊपर कोई लैब वर्कअप कराया हो. In case of doubt, yes, we do have an option to get the labs done, but हम usually clinically और इनको treat कर रहे होते हैं, keeping the lesion की morphology and considering classification उसकी proper और फिर causative organism की know how. अगर हम start करें option 4 से तो you can see a big nodule with translucent some discharge on it and a bit opening. It's a very big nodule. So जैसे हमने folliculitis की अभी definition पढ़ी उसमें तो this doesn't fit well. Option 2 पे if you come, option 2 में you can see red dots but you do not see a white or yellow tip on top of it. Option 3 में you see macules or patches. मतलब आपको skin पे discoloration दिख रही है but you don't see any papules or any red dots. Whereas in option 1 you see really well uh, the red dots with the yellowish tip on top of it. So option 1 fits really well into the diagnosis of folliculitis. I may request our audience and respected doctors to write down the option in the chat box if you may find it interactive हो जाएगा थोड़ा सा अगर हम face to face कर रहे होते कोई और हालात होते तो it would have been a really great interactive session. Moving on to another condition, which is furuncle. Okay, so furuncle is also again an infection of the hair follicle. Now you may ask कि जी अगर वो भी hair follicle का infection है, folliculitis ये भी hair follicle का infection है, what is the difference? Difference is in the depth. डेप्थ के अंदर डिफरेंस है. डीपर द इन्फेक्शन गोज मोर सिवियर इट बिकम्स एंड जितना सुपरफिशियल है वहां जो पस है वो एपिडर्मिस की लेवल तक आपको दिखाई देता है. बहुत सुपरफिशियल होता है फॉलिकुलाइटिस में. वेयर फरंकल के अंदर जो सुपरेशन है दैट एक्सटेंड्स इनटू द डर्मिस एंड इट गोज डाउन इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू जहां स्मॉल एब्सेस फॉर्म हो जाते हैं. फरंकल का यही है डिफरेंस इसका कि वो सुपरफिशियल है और ये डीप है एंड दीज आर लार्ज इन्फ्लेमेटोरी नोड्यूल्स जिसमें से हेयर इमर्ज होते हैं. एंड गर्मियों में मदर्स बच्चों को लेकर आती हैं बच्चों के फेस पे बटक्स पे थाइस पर. दे वेरी कॉमन इन समर्स. दिस इज द सीजन इन पाकिस्तान. समर में बहुत कॉमन होते हैं ओवर क्राउडिंग अनहाइजीनिक कंडीशंस और दीज काइंड ऑफ थिंग्स तो बहुत ज्यादा ये एडअप करती हैं गर्मी बहुत ज्यादा hot and humid weather. So these are the few pre prevailing factors या ये इस तरह की चीजें होती हैं जो कि इन चीजों को एग्रीवेट करती हैं गर्मियों में ज्यादा. अगर हम ऑप्शन 4 लेके चलें तो ऑप्शन 4 में भी यू सी अ नोड्यूल बट दिस इज दिमेटस रिंग है सेंटर में ट्रांसलूसेंसी दिख रही है आपको एंड यू कैन अप्रिशिएट दैट दिस इज पाम. मुझे भी बहुत ऐसे तक पता नहीं चला व्हाट एरिया ऑफ द बॉडी इट इज बट व्हेन यू सी इट क्लोजली यू कैन सी दिस इज द हाइपोथिनार एमिनेंस and another hand is folding it because you see the creases on it and this is not a hair bearing area. So furuncles and folliculitis these don't occur in non hair bearing areas so it cannot be a furuncle. When you come in option 2, in option 2 you see a few vesicle I may say or papules I may say with a few openings in it and you can see a far away एक lesion है एक thyma type का. So ये भी nodule में नहीं आ रहे कोई भी. In option 3 if you see there is a nodule, yes, and when you will feel it touch it you'll get to know कि इसकी nature क्या है. In option 1 you also see a nodule but in option 1 you see multiple yellowish tinge उसमें आपको दिख रहा है 3-4 जगहों पे which could be multiple hair emerging out of these yellowish spots. वो आप जब closely observe करेंगे patient को तो पता चलेगा. So according to the furuncle morphology which we just went through सबसे ज्यादा जो fit बैठ रहा है diagnosis में वो option 3 बैठ रहा है. Now, if we come to another indication, which is carbuncle. So, carbuncle is an infection which involves several adjacent hair follicles. If I may summarize it, if बहुत सारे furuncles को coalesce कर लिया जाए, मिल जाएं, they all collectively make a big inflammatory mass which is known as carbuncle. And there are multiple sinuses which are visible. जैसे कि हमने last case में option में देखा था 1 में कि elbow पे जो lesion था multiple pus आपको दिख रहा है जो कि अभी it has not been erupted. वो अभी उसका जख्म open नहीं हुआ है.
सो लेकिन जो कार्बंकल है उसमें इसी तरह से मल्टीपल फरंकल को एलीज करते हैं बेस में से, वो एक बड़ा मैस बनाते हैं, मल्टीपल ओपनिंग्स होती हैं, एंड देयर आर सम एरियाज इन आवर बॉडी व्हिच आर फेवरेट एरियाज फॉर कार्बंकल्स टू अकर, एंड दोज आर द areas which is under the neck or the scapular lesion जो है हमारा interscapular lesion. And one more thing is very important about carbuncle. Whenever you diagnose carbuncle, it is very easily diagnosed because मैंने जब भी इसकी face to face meetings की हैं और activities की हैं, face to face lectures दिए हैं, conduct किए हैं, तो always ये diagnosis सबने बहुत आराम से कर ली है because इसकी इतनी peculiar picture होती है कि you can never miss it. One more thing that is to remember here is कि when we diagnose a patient with carbuncle, it is always it's a good idea to have some labs run through that patient and rule out diabetes, because diabetes is one thing which could be there, and patient might be a sufferer of diabetes because carbuncles are usually occurring in patients with diabetes. That doesn't mean के जिनको diabetes नहीं होती उनमें नहीं होता, but majority of the diabetic patients they tend to have carbuncles, and the main causative organism is Staph aureus. Now this is a very interesting diagram and I'm pretty sure कि आप सबको इसमें से बहुत easy हो जाएगा जो मैंने आपको clinical clues बताए हैं उनकी light में diagnose करना कि which is carbuncle. Option 4 obviously is folliculitis. Option 2 is furuncle. Option 3 can be furuncle or carbuncle if multiple orifices दिख जाएं या hair emerge होते हुए दिखें, because ये favorite site नहीं है carbuncle की, but option 1 is the favorite site of carbuncle. It is the back interscapular lesion है, ये back of the neck है, back पर है. It is a large inflammatory mass and it has multiple openings. So option 1 fits into the diagnosis of carbuncle. Coming to abscesses, we all know that being doctors के what are abscesses? Abscess कोई भी cavity fluid filled is known as abscess. And in our final year in our house job हमें ये सिखाया गया है कि एक abscess को किस तरह diagnose करते हैं. We use our index finger and our middle finger and then we maneuver it in such a way that we can feel the shifting of the fluid into that nodule or into that cavity which is touching your both the fingers. So it is very easy to diagnose clinically. They are painful, tender, fluctuant red nodules, and they're often associated with fever, swollen lymph nodes, and fatigue, so on and so forth. And the main thing that is very, very important for us to know is that the main causative organism is Staphylococcus aureus. And besides that, they can occur in any part of the body. It is not necessary that they have to occur in hair bearing areas. So, if we start from option 1, we have diagnosed option 1 as furuncle. Option 2 could be furuncle carbuncle. Option 3 is we have lesions on small vesicles and a crusted lesion in the upper lip area. You can see the mustaches of the patient here, which is obviously not abscess. And now we are left with one nodule which is on a non-hair bearing area with erythematous ring and central translucency, and it is known this is fits really well into the diagnosis of abscess. Now moving on to infected wounds. Wounds are जख्म, कोई भी जख्म होता है वो इन्फेक्टेड कब होता है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सोर्स क्या है इन्फेक्शन, जो वुंड है चोट लगने की सोर्स क्या है, वेदर जिस चीज से चोट लगी है वो बहुत ही कंटेमिनेटेड थी चीज, रोड पे गिरने से चोट लगी है, एक्सीडेंट से चोट लगी है, घर में कोई शार्प ऑब्जेक्ट से लगी है, ऑक्यूपेशनल कोई हैजर्ड हुआ, एक्सीडेंट हुआ, वो चोट लगी है. एक तो सोर्स क्या है, कितनी कंटेमिनेशन है, दूसरा पेशेंट की अपनी हाइजीन एंड द फर्स्ट एड that has been given to the patient, and then the nutrition status of the patient. This is very, very important. So whenever there is a breach in the continuity of the skin, microbes they find their way in the skin and they breach that skin, they go inside, they multiply, and then they cause infection. And what are those organisms? Those are Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes. Moving on to the pictorial diagnosis of infected wounds. So if we talk about option 4, if you look into this, you just see some blood clots and a streak of blood. There are no signs of any infection. In option 2, you see a braided skin.
No signs of infection. In option 1, you see a wound having blood oozing out of this wound. You can see really well near the socks area, the blood is oozing out on the lower part of the limb. And in option 3, if you see a healthcare professional holding the hand of the patient with very irregular lesion, few areas of approximation and few areas have gaping wounds, gaping areas, and here you can tell that this wound has been taken care of previously, but now there are signs of infection. So this is infected wound. नाउ कमिंग टू इन्फेक्टिव एक्जिमा. एक्जिमा आई थिंक वो है जो एक्नी और एक्जिमा ये सबसे कॉमन हमारी ओपीडी में आते हैं. स्किन के ओपीडी में तो बहुत कॉमन है हमारे पास एक्जिमा आना और एक्नी आना. एक्जिमा बहुत कॉमन है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड वेरी क्लोज टू माय हार्ट. एक्जिमा is a very broad umbrella underneath which we park endogenous and exogenous eczema. Eczema is a Greek word which means to boil over, and whatever the cause is, eczema has one classical symptom which is common with all the eczemas, and that is itching. Itching is a common symptom. If it does not itch, it is not eczema. Please think of something else because all the eczemas itch. And eczemas are known as dermatitis as well. I always say that all the eczemas are dermatitis, but not all the dermatitis are eczema because dermatitis simply means inflammation of the skin. Inflammation of the skin किसी भी वजह से हो सकती है, but in eczema there is inflammation and it can be used interchangeably. This terminology, not all the eczemas are infected. There are two terms. One is infective eczema, one is infected eczema. Regardless of that, whenever there is an infection in the eczema, the causative organism is Staph aureus mainly, and we have to use appropriate management to eradicate the infection and then to treat eczema as well. So moving on to the pictorial diagnosis of infective eczema. In picture 4, you see a child's face with xerotic look or dry look. This is also a variety of eczema which is known as atopic eczema or atopic dermatitis. This is the endogenous type of eczema. And in this, you do not see any signs of infection. In option 2, this is also a type of dermatitis, seborrheic dermatitis. You can see the greasy scale and red patches. It can occur anywhere in the body, usually the upper trunk area. In option 3, you see an annular lesion with the surrounding adherent scale and central clearing. This does not fit into the diagnosis of infective eczema. In option 1, if you see bilateral involvement of toes and dorsum of the foot as well. You see hyperpigmentation, some scabbing, some boils or some blisters and some denuded skin as well. So this fits into the diagnosis of infective eczema really well. So all the eczemas have three stages: acute, subacute, and chronic. In acute, there is just the inflammation of the skin. In subacute, and there are bubbles, small bubbles, fluid-filled bubbles. और जब वो पेशेंट इचिंग करता है, क्योंकि इचिंग इज अ हॉलमार्क ऑफ एक्जिमा, देयर इज इमेंस इचिंग, बहुत इचिंग होती है एक्जिमा में. व्हेन पेशेंट इचेस, दोज बबल्स और दोज वेसिकल्स जो छोटे छोटे से छाले बने हुए होते हैं, sago grain type, sagudáne type, वो फट जाते हैं. They are very transparent, and when they erupt, when they rupture, they release fluid, and that fluid gets adherent to the skin, giving it a glistening look. So then at that stage, we call eczema subacute eczema. When the eczema is left untreated or not completely, not attention is not being paid to the eczema, it turns into a chronic stage. And in chronic stage, eczema has hyperkeratinization, hyperpigmentation, fissurings, cuts, and infection. So option 1 fits really well into the diagnosis of infective eczema. Now coming to discussion and management. Obviously, we are talking about the bacterial skin infection, so we have to treat our patients with antibiotics because bacteria get eradicated by antibiotics. This is an article of magazine Newsweek, and it has a very catchy caption: "The death of antibiotics," and pretty scary, daunting as well. The death of antibiotics, and we are running out of effective drugs to fight off an army of superbugs. So these superbugs, ये जो bacteria हैं, we all know that these microbes, how smart they are, and how fast and speedily they multiply themselves if left untreated.
सो हमारे पास उतनी एंटीबायोटिक्स है नहीं, हम बना नहीं रहे उतनी जितनी हम लिख रहे हैं स्पीड में। और इतनी स्पीड से एंटीबायोटिक्स लिखना, non-judicious use, unethical use, or inappropriate use of antibiotics is leading towards the death of antibiotics. Means we are heading towards an era which would be post antibiotic era, we may call it. WHO ने अपनी एक स्टडी की है सन 2014 में, और उस स्टडी के मुताबिक इफ वी डू नॉट एक्ट टुडे, हमने अगर आज नहीं काम करना शुरू किया तो बहुत जल्दी हम एक ऐसे टाइम में एंटर हो जाएंगे बाय द ईयर 2050, जब दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ्स होंगी लोगों की एएमआर की वजह से। व्हाट इज एएमआर? एएमआर इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। पेशेंट किसी भी कंडीशन से एडमिट हो हॉस्पिटल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, और उसको कोई भी एंटीबायोटिक ना सेंसिटिविटी शो कर रही हो, देन द व्हाट ऑप्शन इज लेफ्ट फॉर दैट पेशेंट? Definitely it is gonna raise the mortality rate of the patient. So by the year 2050 there'll be more deaths due to AMR, more than HIV, more than cancer, more than cholera, more than respiratory tract infection, more than cardiac, more than road traffic accidents. AMR की वजह से होगी। And I have seen in my clinical experience during my residency time, during my clinical affiliation in the largest tertiary care hospital of Karachi, that ऐसे एडमिटेड पेशेंट जो पूरे सेप्टिक और सेप्टिसीमिया बैक्टीरियमिया के अंदर है एंड दे नीड एंटीबायोटिक्स, और जब हम उनका कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराते हैं दे शो रेजिस्टेंस टू ऑल द अवेलेबल एंटीबायोटिक्स। सो इट्स अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस एज डॉक्टर्स। हमारा रोल एज डॉक्टर्स क्या है? हमारा रोल एज डॉक्टर्स ये बनता है कि हम पेशेंट को एथिकली ट्रीट करें। आज जो हमने इन्फेक्शंस पढ़े, आज जो हमने इंटरेक्ट किया, जिन इन्फेक्शंस की डिस्कशन की, ये वो कॉमन इन्फेक्शन है जिनमें हमें किसी भी तरह के लैब्स कराने की जरूरत नहीं होती। बट आई ऑलवेज गिव अ डिस्क्लेमर, it is always a win-win situation. You always have an option in case of doubt. अगर फैसिलिटी है और आप चाहते हैं एज अ सेकेंड राउंड करना, हाउ शुड आई पुट इट, कि आप ये चाहते हैं कि जी पेशेंट को मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करूं बट मुझे अपना डाउट दूर करना है, मे बी ये इन्फेक्शन ना हो जो मैं सोच रहा हूँ। So you always have an option and you can always send the culture and sensitivity and treat the patient empirically. But the first line of management should always be an empirical line. The drug should always be guideline supported. The drug should always be the first line of therapy. It should always be easily accessible, और पेशेंट को ऑर्गेनिजम्स वो जो मोस्ट पॉसिबल कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हो उनको कवर कर रही हो। दैट शुड बी द treatment of choice or the antibiotic of choice for the patient, rather than jumping to higher generation of antibiotics or using the antibiotics which are parked in the reserve group or watch list. We are not doing any good to our patients. We are just exposing our patients to those antibiotics which are reserved. We are just exposing our patients to those antibiotics which are reserved for those infections which are really, really critical, those infections in which patients को वो organisms involved होते हैं जो कि patient को कभी भी उन antibiotics से sensitivity नहीं show करते जो first line होती है। रीजन कोई भी हो, कॉज कोई भी हो, हमारे स्किन इन्फेक्शन माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर में, परयूलेंट एंड नॉन परयूलेंट में डिवाइडेड है। हमारा गोल होता है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को इरेडिकेट करना, साइन एंड सिम्टम्स एलिविएट करना और कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना। कमिंग बैक टू आवर कंडीशन, वी देयर आर complicated or uncomplicated SSTIs, whatever the cause is, you have to use the empiric choice of antibiotic and you have to cover the most likely organism as I mentioned. Here you can see the spectrum of the first generation cephalosporin that includes gram positive and gram negative, Staph aureus, and Streptococcus pyogenes, showing the coverage with beta-lactam antibiotics, which are first-gen cephs, and their role is they have penicillin binding proteins located on the wall. वहाँ जाके they are the inhibitors of cell wall synthesis. They go, they breach into the wall of the bacteria, they enter and they eradicate the bacteria. So they are guideline recommended as well as first line of therapy, like first generation cephs are recommended by the evidence-based guidelines and the Infectious Disease Society of Korea guidelines as first line of therapy for most skin and skin structure infections, common diagnosis and management. Thank you all.